Hi guys, welcome to OAS Hub. तो आज GS पेपर 2 रे गवर्नेंस पार्ट रे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट रे किछि क्वेश्चन मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस तो हमर सीरीज चली से सीरीज रो हमें कंटिन्यू अछि ये सेशन गुडा टिके रैपिड सेशन थाए जते शीघ्र हमें ताको रिवाइज करबा सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 what is representation of people act 1950 what are its objective representation of people 1950 कौन एवं तार ऑब्जेक्टिव कौन so what is representation of people act 1950 and its objective तार देखियो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल यही अच्छी तार शेड्यूल्स First schedule allocation of seat in the House of People, total number of seat in the Legislative Assembly. Similarly, allocation of seat in the Legislative Council and local authority for the purpose of election to the Legislative Council. ये fourth schedule तुम्हें यही बड़े तारा schedule अनुसार पाइबो. Okay, so this is हमें representation of people act देखुଥିଲେ. So representation of people 1950 and then 51. So holding यार कौन मेन एम कौन कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनागला सो मेन एम है कौन कि होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ए साइन क्वा नन ऑफ डेमोक्रेसी ये व्हाट यू मीन बाय देयर इज इंडिस्पेंसिबल ऑफ द डेमोक्रेसी द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेसी so to ensure conduct of election in a free and fair and in an impartial manner the constitution makers incorporated part 15 that is article 324 to 329 election commission in the constitution and empower the parliament to make laws to regulate the electoral process so parliament द्वारा empower कराई part 15 रे आर्टिकल 324 रु 329 भितरे एई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ले पार्लियामेंट को पावर दिहाई टू मेक लॉ रिगार्डिंग इलेक्टोरल प्रोसेस so election commission of india is an watchdog of free and fair election in the country the article 324 of the constitution provides for its establishment so in this context parliament has enacted representation of people act 1950 and 1951 representation of people in 1950 and 1951 so in this TP that is will जोंटे कि आम डिस्कसन देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फॉलोड बाय जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1950 तो ये डिस्कसन देखिए सो व्हाट इज delimitation and what are the provision provided under representation of people act 1950 so delimitation आम जानिछ तो यार आम 1 by 1 सेक्शन जदि देखा ये सेक्शंस अच्छी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 delimitation means act or process by fixing limits or boundary of the electoral territorial constituency in the country territorial constituency माने धरो एमएलए constituency हो या एमपी constituency हो सही एरिया को territorial constituency मानती और provinces having legislative body तो ये delimitation करा जाए delimitation commission बना जाए ये भी तार फंक्शनल है delimitation करिवो territory ये its order have the force of law and cannot be called in questions before any court. So these order came into force on date to be specified by the President of India on this behalf. तार 1 by section जो देखिबो इथर इलेक्शन कमिशन डिफाइन कराई कि तुमरो प्रेसिडेंट इलेक्ट करिवे अंडर 324 of the Indian Constitution. Provide designation nomination of ER by the ACI ये सब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये सब अंडर अच्छी तो ऑब्जेक्टिव और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 यार ऑब्जेक्टिव कौन कहीं रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट बनाई फर्स्ट ला delimitation ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन एंड रिऑर्गेनाइज द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली दीटा चागर केवल पार्लियामेंट आउ असेंबली लेटेस्ट सेंसस
मैं जानिथिबो डिलिमिटेशन 1951 सेंसस पर 1952 रे डिलिमिटेशन ହେଇଛି 61 ପରେ 62 ରେ डिलिमिटेशन ହେଇଛି 71 ପରେ 72 ରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ 71 सेंसस ପରେ ଆଉ डिलिमिटेशन 76 ରେ ତାକୁ फ्रीज करा ହେଇଥିଲା अगेन 2000 पुणी डिलिमिटेशन है 1991 सेंसस अकॉर्डिंगली एवं 2002 रे 2001 सेंसस अकॉर्डिंगली करागला एवं तापरे 2002 रे ही फ्रीज करागला फर्दर 2026 पर्यंत तो आमर वर्तमान जो आमर डिलिमिटेशन अच्छी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छी अकॉर्डिंगली 2001 सेंसस अकॉर्डिंगली ना 2011 सेंसस ना 2021 सेंसस ओके 21 सेंसस हैनी एपर्यंत बाहरिनी तो एलोकेशन ऑफ सीट determine the number of seats for each state Lok Sabha and state legislative assembly preparation and revision of electoral rules preparation and electoral rule to establish procedure for creation of and periodic updating of the electoral rules qualification of voters set eligibility criteria for voter registration तो ये काम इलेक्टोरल रूल प्रिपरेशन करवा किए डेथ हो गला किए नुआ आसिले पीरियडिक अपडेट करवा एनश्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देन रिजर्वेशन ऑफ सीट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेचर सिमिलरली करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रूल करेक्शन करवा इंक्लूजन डिलीशन करेक्शन वोटर डिटेल्स एक्यूरेसी मेंटेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये मेन काम है तार फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ये ऑब्जेक्टिव वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है फर्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ सीट प्रिपरेशन ये सब पॉइंट गुड़ा सब लिखी नियो प्रिपरेशन एंड रिजर्वेशन रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स प्रिपरेशन करवा और रिविजन करवा रिजर्वेशन सीट जोटा कि एससी एंड एसटी पई रिजर्वेशन दबा एंड करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रूल inclusion, deletion, correction, voter details of electoral law to maintain accuracy. Free and fair election to lay groundwork for a transparent and democratic electoral process by ensuring accurate voter list and fair constituency representation. The representation of people in 1950 is an Indian law that lays down the provision relating to allocation of seat, delimitation of constituency, and preparation of electoral rules for the election in India. It primarily deals with the conduct of election to the Lok Sabha and state legislative assemblies and ensure free and fair electoral process. Next question. What are the key challenges in the grievances redressal mechanism in India? Suggest the measure to improve citizen-centric governance. Grievances redressal mechanism. I hope समझते जानी थी what do you mean by grievances redressal mechanism? क्वेश्चन बुझिल समस्ते क्लीयरली क्वेश्चन बुझिल नहीं फर्स्ट थिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विषय आम देखले तो ये ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मेकानिज्म या जीआरएम कही पार माने लोकंकर जेतेबेले जहाँ असुविधा अच्छी जहाँ ग्रीवांस अच्छी ताको केमिति रिड्रेस करा जाई पारिबो so GRM is an organization is an important instrument to measure the effectiveness as it provide feedback on working of the organization. If feedback provide करे organization के काम करे. Basic principle is that if promised level of service delivery is not achieved or if a right of the citizen is not honored, then citizens should be able to take recourse
to a mechanism for grievances redressal. To mechanism for the grievances redressal. Okay. So here कौन ना effectiveness as it's provide feedback on the working of the organization. Two designated nodal agency. Two designated nodal agency in union government handling grievances. कौन ना गोटे Department of Administrative Reform and Public Grievances DRAPG under Ministry of Grievances and Public Grievances. पर्सनल एमती गोटे थी सो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरी ये दीटा डेजिग्नेटेड नोडाल एजेंसी अच्छा जी कि ग्रीवेंसेस so the CPGRM's portal a centralized system for public grievances centralized portal for CP Grams portal गोटे public grievance portal it redresses nearly 60 lakhs public grievances in the period of 2002 to 2024 and has mapped 1.1 lakh grievances officer of ministries and department and states and union territories. 60 lakh province grievances यही समय रही so initiative taken by तो बुझेगा दीटा का इंस्टीट्यूशन जोड़े कि ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कौन गोटे थी देखिए MOPPGP एंड CP Grams एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरी ये CP Grams पोर्टाल अच्छी जे कि या थ्रो पब्लिक रिड्रेसल हुए 60 लाख प्रोविंस ग्रीवेंसन होती 2022 रु 24 so initiative taken कौन the constitutional and statutory institutions like CPC, Lukayukt, NHRC, SSRC look into the complaints of the corruption, negligence in conduct of public servant regarding human rights violation, proactive governance, timely implementation of Pragati scheme, proactive governance and timely implementation, multi-purpose and multi-modal platform to address common man's grievances. To address common man grievances. Then E-Nirvana launched by CBDT, Central Board of Direct Tax, to fast track taxpayer grievances. Then Sevattam model developed with improved quality of public service delivery. It comprises 3 modules, namely citizen charter, grievances redressal mechanism, and capacity building for service delivery. These things are very important. So initiative statutory initiative like CBC, initiative like CBC, Lukayukt, NHRC, SSRC, ये complaints सब देखती corruption or negligence in the public servant पाई. Then Pragati, proactive governance and timely implementation. एथुर कौन जाना कि कामटा जल्दी हम टाइमली हम multi-purpose and multi-modal platform
जे कि कॉमन ग्रीवेंसेस के नजर रखियो। ई निर्माण जे कि सीबीडीटी लॉन्च करची सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स जे कि फास्ट ट्रैक डिलीवरी ऑफ द सर्विस या ग्रीवेंसेस related taxpayer grievances. ये only direct tax माने taxpayer grievances. Then seventh model develop with no improved quality of public service delivery. Develop with no improved quality of the public service. It comprises three modules, namely citizen charter, grievances redressal mechanism, and capability building of service delivery. ये तीनटा को बहुत चारटा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो। तो challenges कौन? What are the challenges? गोटे है delayed resolution, bureaucratic inefficiency, procedural delay, result in slow grievances resolution. जानिछ ब्यूरोक्रेसी रे केमती कोन हुए काम? Cases often remain pending for long period, leading to citizen frustration. Lack of accessibility and digital divide. Rural and marginalized population face difficulty in accessing online grievances platform. Many government grievances portal require internet literacy, limiting their reach. Low awareness, so first la delay resolution बहुत delay हो जाउ. Lack of access, digital divide, rural urban ro digital divide, and low awareness among the citizens. Citizen में तो awareness ही बहुत कम है ना नहीं. So many citizens, especially in rural area, are unaware of the available citizen छाड़ दियो, rural छाड़ दियो, तुम मैंने सब जानी चो ये portal अच्छी वाली, such as CP Grams, Lokpal, Consumer Forum, ये जानी चो. So lack of awareness leads to underutilized of this platform. प्लाटफर्म ठीक से यूटिलाइज होनी. जेमिति 140 कोटी पॉपुलेशन 140 कोटी पॉपुलेशन रे मात्र 60 लाख जदि ग्रेवेंसेस होईची लास्ट 2-3 वर्ष भितरे तो वेरी लो ग्रेवेंसेस, quick implementation and accountability. Despite laws like Right to Public Service Act in various states, enforcement remains weak. Officer responsible for grievances resolution ये तांको भीतर किसी इंटरेस्ट न था ना अकाउंटेबिलिटी अच्छी ना इनएक्टिविटीज लैक ऑफ incentives and political and administrative interference. Influence from the politician and the higher authority sometimes result in biased corruption and favoritism further dilute the effectiveness of the mechanism. ये लिखियो एगुड़ा सब लिखियो. Then fragmentation and overlapping of jurisdiction. Multiple grievances redressal platform, Lokpal, Lokayukt, RTI, Consumer Forum. Confusion करियो कंप्लेंट को किए कौटी कौन कौन कंप्लेन करियो. No centralized system ensures seamless tracking of grievances. ट्रैकिंग सिस्टम नहीं कि कौन मु जो ग्रीवेंसेस टा देली मु जो प्रॉब्लम्स टा कहली मो प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन जाईछि केते पर्यंत काम होईछि. So poor feedback and monitoring mechanism. There is no structured follow-up system to check whether a resolved grievances has led to actual relief for the complaint. Citizen satisfaction is rarely assessed after grievances resolution. तो कौन कौन भाई इम्प्रूवमेंट करवा डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करवा कौन इम्प्रूव कले आम सिटीजन सेंट्रिक हो पार कौन इम्प्रूव कले आमर सिटीजन सेंट्रिक हो पार फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म सिंप्लीफाइंग द ग्रीवेंसेस पोर्टल लाइक ग्राम्स ensuring multilingual mobile friendly access use AI and data analytics for quick categorization and resolution the complaint. Improve accountability and timely implement our strict time bound resolution mechanism दरकार. आउ जदि डिले करिवे ताले पेनल्टी लगे. मेक ग्रीवेंसेस ऑफिसर अकाउंटेबल तांकर परफॉर्मेंस ऑडिट हो ये ग्रीवेंसेस ये सॉल्व करू जी ऑफिसर तांकर परफॉर्मेंस ऑडिट होवा दरकार एंड पब्लिक डैशबोर्ड होवा दरकार कि पब्लिक देबे फीडबैक या ऊपर ये कौन करूची लोग. Enhancing citizen awareness, conduct awareness campaign through panchayat, social media and mobile SMS alert. Introduce grievances redressal education in school curriculum to empower young citizens. Reducing bureaucratic red tape. गोटे सिंगल विंडो सिस्टम हवा दरकार कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जमती न हो
सिंप्लीफाई करिए डॉक्यूमेंटेशन, देन स्ट्रेंथन लोकल लेवल मेकानिज्म, ग्राम सभा हो, म्यूनिसिपालिटी हो, वार्ड कमिटी हो, ये लोकल ग्रेवेंसेस को लोकली सॉल्व करा जाओ। इंक्रीज फंडिंग एंड ट्रेनिंग फॉर लोकल ऑफिशियल टू हैंडल कंप्लेंट एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इम्प्लीमेंट रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर कंप्लेंट जोटा कि यहाँ होनी ए कंप्लेन देल, कंप्लेन रेजिस्टर हो गला आसला, तापर कंप्लेन नेक्स्ट प्रोसेस केते पर्यंत गला, यही दिन एतिक समय रेजिस्टर होती, तार सॉल्व एतिक समय है, एवं तार सोशल ऑडिट भी हवा दरकार, एवं सिटीजन रिपोर्ट्स हवा दरकार। सोशल ऑडिट हेले तर रहिबो कि लोके सक्सेसफुल पैस इम्प्रूव करने कौन ना डिजिटल प्लाटफॉर्म को इम्प्रूव कर स्ट्रेंथन कर अकाउंटेबिलिटी टाइम रिजोल्यूशन कर सिटीजन अवेयरनेस पूरी एनहांस करा जाऊ, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, strengthening local level mechanism and transparency and public participation, strengthening legal and institutional for expand right to public service act across all state to ensure timely delivery। right to public service act भी अच्छी आम ओडिशा रिलेटेड पढ़ा। strengthening rule of lokpal, lokaयुक्त and other independent oversight, एमानक गोटे रिडंडेंट होगी अच्छा यहाँ किसी काम ना। So a robust grievances redressal mechanism vital to ensuring citizen trust, participatory governance, improved service delivery. By integrating technology, accountability and citizen engagement, India can move toward a more efficient, transparent and citizen-centric, citizen-centric grievances model. Clear? Next questions देखो। Citizen charter. ये मन रख दे सिटीजन the tools to enhancing accountability in government, critically examine its effectiveness in India। तो ये गोटे क्वेश्चन सिटीजन चार्टर रिलेटेड तुम सॉल्व होगा। सिटीजन चार्टर जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुम सॉल्व कर। तो सिग्निफिकेंस कौन ना रेस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट क्रिएट हम, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी, सेव टैक्स पेयर मनी, efficient governance, improve efficiency of the public officer, improve accountability, service deliveries in town bound manner and eliminate corruption। These are citizen charter or तार significance। So citizen charter is a public document that outline the commitment of government department regarding service। गोटे सिटीजन गोटे चार्टर रहा कि भाई एतिकी चार्ट्रे एतिकी दिन में यही प्रोब्लेम मोर सॉल्व हम, ओके तार टाइम बाउंड रहा चार्टर कहुए सिटीजन चार्टर ना से सिटीजन चार्टर माने कौन डॉक्यूमेंट से सब दिखाई कि डिपार्टमेंट वाइज गोटे कमिटमेंट दिखाई भाई तुम डीएल बन तो मस भर तुम पासपोर्ट हम तो तुम 1.5 मास भर तुम राशन कार्ड हबार अच्छी, तुम भोटर आईडी हबार अच्छी, तुम जेकोसी तुम सर्टिफिकेट हबार अच्छी, 10th सर्टिफिकेट 12th ये सब कम गोटे टाइम बाउंड मैनर हम, टाइम लाइन दिज्व रिगार्डिंग इन सर्विस। जदि नहला तार रिलेटेड ग्रेवेंसेस रिप्रेसल मेकानिज्म भी हम, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस केमिति इट एम कौन ना गवर्नमेंट को गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट करवा, अकाउंटेबल करवा एंड सिटीजन। ये 3टा वर्ड को मन रख देथिबो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन। These are all very important words।
तो यहाँ 1997 इंट्रोड्यूस होता एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हिसाब से मेन है सर्विस डिलीवरी सरकार कौन सरकार गोटे गवर्नमेंट है गवर्नेंस करिवो एंड गवर्नेंस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट होती दरकार एंड सर्विस डिलीवरी करिवो सी एंड सर्विस डिलीवरी इंप्रूव केमिति हबो थ्रू दिस मेथड ट्रांसपेरेंट मेथड रे अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन एंड पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तुम्हें कौन सी ट्रस्ट अच्छी तुम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कହାର भरोसा नहीं सब लुटेरा कहती सब आड़े करप्शन हो तो ये सिग्निफिकेन्स तार एंड दीज आर तार ये देख लो तो इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन चार्टर इन एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी एनहांस करने तार इफेक्टिवनेस केमती रही So transparency in service delivery. Transparency in service delivery clearly defines the service offer, time frame, and responsible officer, reducing ambiguity in the governance. टाइम फ्रेम दे दिया ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल करागला तो कौन दे पासपोर्ट सेवा केंद्र ये मेंशन कराई कि केते दिन भीतर पासपोर्ट इश्यू हम तो ये कौन माने टाइम लाइन गोटे दे दिया तो से अनुसार तार एफिशिएंसी फिक्स हो गला देन एम्पावर सिटीजन सिटीजन आर अवेयर दैट तांकर राइट्स कौन तांकर एंटरटेनमेंट्स कौन एंड एनेबल देम टू डिमांड टाइमली सर्विस कह भाई मसे हो गला मोर काम है पर्यंत काम करके दे रेलवे पैसेंजर चार्टर आउटलाइन रिफंड एंड कंपेनसेशन पॉलिसी नहीं कि भाई एत दिन भर 3 वर्किंग डेज भर तुम रिफंड हो कंपेनसेशन एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी सिमिलरली एनकरेज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेट्स मेजरेबल स्टैंडर्ड फॉर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट गोटे स्टैंडर्ड सेट कर भाई एतिक दिन आम यह काम करुच होची गोटे पीरियडिक असेसमेंट हम आ पब्लिक स्क्रूटिनी भी हो पार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट स्टेट लाइक महाराष्ट्र ओडिशा रे भी मध्य प्रदेश एनश्योर एडहेरेंस टू चार्टर प्रोविजन जो चार्टर मेंशन कराई कि पब्लिक सर्विस एक्ट रे कौन कराई एक्चुअली ना पब्लिक सर्विस एक्ट रे पब्लिक को आमे केते दिन भीतर सर्विस प्रोवाइड करि परिबु तार गोटे टाइम फ्रेम अच्छी सब डिपार्टमेंट अनुसार तो सही अनुसार काम होउची कि नहीं सेटा लोके पब्लिक स्क्रूटिनी करि परिबे एवं ताको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करा जाय परिबो सपोर्ट ग्रेवेनेस ए ग्रेवेंसेस रिड्रेसल मेकानिज्म को सपोर्ट करिवो इट प्रोवाइड फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर एड्रेसिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सर्विस डेफिशिएंसी फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवेंसेस मेकानिज्म जोटा कि सीपीग्राम्स या सहित एलाइन करि परिया मानि नियो चार्टर अच्छी मासे भीतर काम हम काम हलानी आम सीपीग्राम कलु भाई काम होनी आमर तो ऑफिसर को पनिश करा ये भाया इफेक्टिव सो चैलेंजेस कौन ये सिटीजन चार्टर 1997 है ये आइडिया 1997 है डू यू थिंक इट इज फुलफिलिंग इट्स प्रोमिसेस डू यू थिंक इट इज एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन सेंट्रिक लेट्स सी लैक ऑफ लीगल बैकिंग नहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन हो अनलाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ सिटीजन चार्टर लैक लीगल एनफोर्सबिलिटी से लीगल एनफोर्समेंट माने तुम्हें जदि काम न हो पारा मसे भीतर तुम्हें कौन करमती फंडामेंटल राइट्स तुम वायलेट हेले तुम डायरेक्ट सुप्रीमकोर्ट जापर बट ये कौन कर पुअर अवेयरनेस एमंग सिटीजन मेनी पीपुल स्पेशली इन रूरल एरिया आर अनअवेयर ऑफ द सिटीजन चार्टर से कौन सर्विस डिमांड करेंगे वीक अकाउंटेबिलिटी मेकानिज्म नो स्ट्रिक्ट पेनाल्टी और कंप्लायंसेस लीडिंग टू पुअर एडहेरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल देखिए कभी कौन एम्प्लॉई पाखु तार सैलरी कटाई ये तार सर्विस न देची तार सैलरी कटाई के देखी हैव यू एवर सीन दिस हैव यू एवर सीन दिस
କେବେ କିଟ୍ ଡେ କହୁଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। So lack of periodic review and feedback. Charter are often outdated and generic, failing to address dynamic governance. Many government website list citizen charter that are not revised regularly. अच्छी से दिनटा अच्छी टाइम अच्छी बहुत रेयरली फॉलो कराउची. Implementation gap, bureaucratic apathy, lack of training, absence of interdepartmental coordination hinder the effective execution. Hinder the effective execution. Challenges कौन strengthen करिवा जहाँ challenges अच्छी ताकू भलो करिवा जहाँ challenges अच्छी तो आमे देखिले कौन बेसिकली सिटीजन चार्टर आमे कौन सिटीजन चार्टर इफेक्टिवनेस कौन ट्रांसपेरेंसी empower citizen, encourage perform monitoring, support grievances redressal. Then challenges kono na lack of legal backing, poor awareness among the citizen, weak accountability mechanism, lack of periodic review feedback and implementation gap. एटा सब लेखिकी रखी दियो तुमर एग्जाम रे थरे वन टाइम फिट माने पूरा सबले काम रे लासी जीवो. एंड मेजर टू स्ट्रेंथन सिटीजन चार्टर इन इंडिया लीगल एनफोर्समेंट को बढ़ाइबा. सिटीजन चार्टर को राइट टू पब्लिक सर्विस सहित लिंक करा जाऊ. एंड इम्पोजिंग पेनाल्टी फॉर नॉन कम्प्लायंसेस. बुझला नहीं पेनाल्टी दिया जाओ भाई तुम्हें जदि कम्प्लायंसेस करून तुम्हें पर्टिकुलर डेट रे जदि तुम्हें कामटा फुलफिल करून तुम्हें तार कम्प्लायंसेस जदि न करूच ताहले पेनाल्टी दिया जाओ या तुम सैलरी रु माइनस करा जाओ सैलरी रु अधा नहीं जावा या गोटे सैलरी पूरा दिया जीवनी. You are getting salary because of your service. If you are not providing service, then what is the use of your? So enhancing public awareness, conduct awareness campaign, वर्कशॉप डिजिटल आउटरीच तो लोकों को एजुकेट करो. लोक ऐसी डिमांड करिए भाई आमर मास भर हबार था मास भर है कहीं. रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, एस्टाब्लिश इंडिपेंडेंट ओवरसाइट bodies to ensure timely updates and departmental performance audit. Integrating with e-governance, digitalization of city charter, real-time tracking of service delivery, and AI-based grievances redressal. AI-based grievances redressal and ensuring citizen participation. This is very important. सबुथिरे जोठी भी गवर्नेंस रिलेटेड आसीबो ये पार्ट को सबले सिटीजन पार्टिसिपेट वेरी इंपोर्टेंट पार्ट. You have to be a participatory democracy एवं participatory democracy रे सिविल सोसाइटी रो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करिया लोकल कम्युनिटी एनजीओ को ये रिव्यू करिवे ऑफ द सिटीजन चार्टर ताकू इन्वॉल्व करिया दरकार. तो ये सब so while citizen charter are have improved transparency accountability they are non enforceability poor awareness and weak monitoring limit their impact. जो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चिंता कर 1997 रु आज 25 है पाखापाखि 28 वर्ष इम्पैक्ट कौन सर्विस डिलीवरी से भाया पैथेटिक. Strengthening their legal framework, digital integration, citizen engagement is essential to make them a powerful tool for accountable governance. Clear? So next देखिए corruption. Corruption ये तो बहुत ही important. Corruption is a major challenges to grievances governance in India. Discuss the effectiveness of institutions, Lokpal, CC and Lokayukt tackling corruption. माने एटा दी प्रकार क्वेश्चन से ही पारे. So corruption is a major challenges to the governance in India. So question दी प्रकार ही पारे. What are the major challenges of governance?
and what are the body to deal with the corruption or don't discuss the effective institution लोकपाल so ये सही क्वेश्चन भी एगुड़ा को यूज करि परियो corruption undermines governance by eroding transparency efficiency and public trust. India has established various anti-corruption bodies such as Lokpal, CVC, and Lokayukt tackle this issue. However, their effectiveness remains debatable, structural, legal, and operational. Transparency, efficiency, public trust. CVC, Lokpal, Lokayukt ये सब जानिଛ PI but କଥା ହେଲା their effectiveness remain debatable. India ranked 96 out of 180 countries in corruption perception index in the as its overall score dropped to point to 38 according to the Transparency International. गोटे इंटरनेशनल एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तार रिपोर्ट अनुसार इंडिया 96 रैंक तल आड़ को माने आम करप्टेड चरम सीमार अच्छु तो इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट लोकपाल सेंट्रल एंटी करप्शन अम्बड्समैन एस्टाब्लिश अंडर लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 गड़बड़े होता एवं लोकपाल किए अच्छे जान लोकपाल इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर achievement कौन an independent body with power to initiate investigation can order attachment of the asset in the corruption challenges delay in appointing local member 2019-13 रे पास हला 2019 रे हला 6 वर्ष परे एवं ता पाखर पावर नहीं लेक ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ डिपेंड्स ऑन अदर एजेंसी लाइक सीबीआई फीबीआई इन्वेस्टिगेट करिवे आ सीबीआई न मानला जदी and no jurisdiction over political parties and NGO limiting its scope. CBC, former under the CBC Act 2003, formed it supervises vigilance activity in government department and public sector enterprises. Supervises and advises the CBI in corruption investigations, helps in preventive vigilance measures like systemic audits. Challenges limited authority only advisory lacks power take the direct action heavily depend on the government agency for implement no jurisdiction over politicians restricting its effectiveness तो ये यार भी सही भाया प्रोब्लेम्स अच्छी देन लोकायुक्त स्टेट लेवल एंटी करप्शन बॉडीज आम ओडिशा रे भी अच्छी एटा लोकायुक्त लोकपाल लोकायुक्त एक्ट अंडर होता स्टेट लेवल some state like Karnataka, Maharashtra have strong lokayukt that have exposed high profile corruption cases. But not all states have functional lokayukt. ओडिशा रे देख सुनिछ केबे लोकायुक्त किछि करिछि no uniform structure with different power in the different state. So basically लोकायुक्त एक्ट तो माध्यम रे बट स्टेट पाखर पावर दिया छै स्टेट जेमति तक बनै पारि so these are सब issues अछि so political and bureaucratic challenges कौन political and bureaucratic interference government events affect the independence of Lokpal, CBC and Lokayukt delay in investigation and prosecution cases take years to resolve reducing deterrence lack of public awareness and whistleblower protection ये whistleblower अच्छी जी कि उजागर करे करप्शन इंस्टीट्यूशन भितर जी रही कि उजागर करे ता प्रति प्रोटेक्शन नहीं fear of retaliation discourages reporting of corruption coordination gap agency like CBC, CBI and ED work independently leading to inefficiency measures to strengthen anti-corruption enhance independence strengthen Lokpal Lokayukt by ensuring autonomous appointments and financial independence
speedy investigation and trials, set up a special anti-corruption court, fast track cases deal करिए पे, whistleblower protection, strengthen whistleblower protection act to encourage reporting. whistleblower ଜାଣିଛ ତ କିଏ ଯିଏ whistle ବଜେଇବ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ଥିବ ଯିଏ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ବଟ୍ ସିଏ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ୟା ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ କହିଦେଉଛି ତ ସିଏ ଡରି ଯାଉଛି ତାର ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯିବ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନକ୍ରିଜ୍ AI driven audits blockchain in public procurement and real time monitoring of the government contracts greater public participation encourage social audits RTI activism and citizen oversight. So while Lokpal, CVC, Lokayukt play a crucial role in tackling corruption, their effectiveness is hindered by delays, lack of independence, and limited jurisdiction. Strengthening these institutions with greater autonomy, fast track investigations, and technological integration can enhance their role in ensuring transparent and accountable governance. এইভাবে তুমি কনক্লুজন লিখিব Okay, next last question is direct benefit transfer. DBT has transformed welfare delivery in India. Critically evaluate. Direct benefit transfer. लॉन्च होता ऑब्जेक्टिव है reform the mechanism of transferring cash subsidies and benefits to ensure reduction leakages, faster delivery and elimination of delays in fund flow. माने बेसिकली डायरेक्टली अकाउंट को जीवो है ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो कैश ट्रांसफर हम एग्जांपल इंक्लूडिंग पीएम किसान फार्मर इनकम सपोर्ट जो डायरेक्टली 2000 या 6000 जो ट्रांसफर हो इयरली डायरेक्टली अकाउंट जाऊँगी पेंशन ओल्ड एज एंड विडो अकाउंट को डायरेक्ट स्कॉलरशिप डायरेक्ट जो जो जी जी बेनिफिशियरी ता अकाउंट को डायरेक्टली जाऊँगी सपोर्ट कौन करुच्ची ये फर्टिलाइजर सब्सिडी सपोर्ट कर फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस एंड है स्कूल मिल्स पीएम पोषण ये सपोर्ट कर इवेन आम ए जो गैस जो गैस सब्सिडी सी भी से थ्रू डीबीटी थ्रू मेकानिजम कौन ना पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जोटा कि सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम थाए अंडर नाउ परफॉर्म्स फंक्शन सच एज बेनिफिशियरी लिस्ट प्रिपरेशन digital signing and payment process via Aadhaar payment bridge of NPCI, National Payment Corporation of India. जाम ट्रिनिटी जनधन आधार एंड मोबाइल ये तीन जन को कनेक्ट करार अच्छी जनधन कौन ना जनधन अकाउंट बैंक अकाउंट जो हम आधार तार सहित लिंक करा तार आइडेंटिटी एंड मोबाइल थ्रो रे सी कम्युनिकेशन करि मेसेज पाई परियो तार अकाउंट रो डेबिट हैला या क्रेडिट है इंटीग्रेट्स आधार सीडेड जनधर अकाउंट मोबाइल नंबर टू एनेबल सीमलेस एंड डायरेक्ट क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट रो क्रेडिट हैला जेमती 5000 लेखा मिला सुभद्रा स्कीम डंग आसी मेसेज आसीगला ना नहीं तो पाइछ ना नहीं पैसा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेस बिजनेस करेस्पोंडेंट पाई तो सब अकाउंट को आसती सब ये पाई सब खाया दब तो यूटिलाइजेस बिजनेस करेस्पोंडेंस पेमेंट बैंक्स
and Aadhaar enabled payment system for financial inclusion and delivery of funds. ये गोटे इंपोर्टेंट पैरामीटर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करवा जाम ट्रिनिटी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूपीआई इंटीग्रेशन expand interoperability allowing both public and private sector participation in delivering subsidies and benefits. How DBT equity system had transformed social welfare in India. Effective implementation of scheme. 2016 DBT has delivered 450 scheme to 900 million people and transferring 450 billion directly to beneficiaries. 450 scheme, 900 million people, 450 billion dollar directly transfer कराई account. This accounts for 60% of the welfare and subsidies budget of union government. During COVID-19, DBT provide essential reveal during lockdown. Around 27,000 कोटी टंका to 11.42 crore beneficiary दिया like PM Kisan, मनरेगा सही समय मार्च to April. State disbursed 9,217 crore to 4.9 crore beneficiary under 181 fellows. So finance and inclusion to enable DBT, over 53 crore bank accounts have been opened under the PM Jan Dhan with 67% of them being rural and semi-urban, 56% being owned by the women. So it is very important. Transparency and accountability. Direct जीव account रू okay middleman रही पैसा नवा पाई. So Aadhaar seeding eliminated 90 million fake beneficiary. अब जी account खोला जो माने जो original मनीष होई थी तार details नहीं कि account खोला जो. Saving the government $40 billion by reducing leakages, which previously accounted for 2% of GDP annually. जाऊला बर्बाद थी. Socio economic impact, promote social mobility through rehabilitation programs such as self employment, annual for manual scavenger, strengthening the agriculture economy. PM Kisan डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलला सी चाष करने किसी पैसा मिलला. वुमेन रो इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम होला जो कैश अकाउंट को पैसा आसला भाई मो पैसा भी अच्छी. देन पीएम गरीब कल्याण योजना थ्रू भी किसी पैसा पाइले. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलला. IMF प्रेज द इंडियन DBT स्कीम एज ए लॉजिस्टिकल मार्वेल benefiting women, elderly and farmer. World Bank president also highlighted its success targeting cash transfer reaching 85% rural and 69% urban house. ये बहुत बड़ा ये थिला. सो DBT इम्प्लीमेंटेशन जदि किसी एग्जांपल दे PM किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि which provide income support to farmer is implemented through DBT. LPG subsidy direct benefit transfer subsidy हला. LPG कंज्यूमर आउ तांको डायरेक्टली आगु कौन होता ना LPG वाला काटी दौला पैसा काटिक दिया होता है. डायरेक्ट ओरिजिनल प्राइस दिया होची तापरे तांको अकाउंट को पैसा मिलुची. एटा भी खत्म कर दी सारे. MG नरेगा पेमेंट ता थ्रू भी दिया होची DBT थ्रू. स्कॉलरशिप एंड PDS ये सब माध्यम रे हो. तो कंसर्न करना ओवर रिलायंस ऑन एफिशिएंसी nudging the poor towards private alternatives. Cash transfer shift the burden of basic service into poor who are often unable to afford the private option. Temporary solution. Cash transfer act as a short-term fix but fail to address the deep-rooted structural poverty and inequalities. Limited access. Geographical barrier. Many remote and rural lack of adequate banking facility, digital infrastructure, making it difficult for beneficiary to access. फाइनेंशियल लिटरेसी लोक जना ना बैंक अकाउंट खाता पैसा उठेवा एनरोलमेंट करवा बेनिफिट पाइबा. आइडेंटिफिकेशन करिया बेनिफिशियरी इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ जो एनरोलमेंट होची. About 6.6 lakh farmer lost the PM Kisan scheme benefit due to their failure to updating e-KYC norm. So reform हवा दरकार कौन कौन आगो को देखिए. रिफॉर्म गोल विथ DBT 3.0 building a national level social registry and centralized database.
incorporating best practices from the state initiatives such as Karnataka Kutumba, Rajasthan Jan Aadhar. Targeted outreach जो लोग जी कि रियली मार्जिनालाइज ग्रुप अच्छी ता पाखे पहुँचे दरकार एंड एक्सेसिबल डिजिटल लिटरेसी रूरल पॉपुलेशन पाखु टार्गेट हवा दरकार सेठी जाई पहुँचे दरकार प्रो ट्रेंड कॉमन सर्विस सेंटर एंड लास्टली ग्रेवेंसेस रिड्रेशन मेकानिज्म हवा दरकार सो दैट सिंगल विंडो ग्रेवेशन मेकानिज्म रहा दरकार खास करके लोकल ग्राम पंचायत लेवल ग्लोबल इम्प्लिकेशन कौन ना स्ट्रेंथनिंग इंडियाज लीडरशिप इन बोथ global north and global south as it serves as a scalable model of addressing poverty and promoting position India as a key contributor to global discussion on digital public infrastructure and cities. This is it for our DBT scheme and तार इवालुएशन सब प्रकार इवालुएशन देखीदे देन आम देखले करप्शन तार रिलेटेड कौन कौन इंस्टीट्यूशंस अच्छी ताकू कर्व कर सिटीजन चार्टर देखले बड़ बड़ इश्यू सब आज देखले सिटीजन चार्टर देखले देन ग्रेवेंसेस रिड्रेसल मेकानिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट 1950 सबुथिर नोट्स कर देथिबो मेक ए नोट्स ऑन दिस तुमर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जोंटा कि सिलेबस रे पूरा लेखा हेची एउडा को तुमर कंप्लीट हे गला या रिलेटेड खाली तुमे थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल जय जगन्नाथ नमस्कार।